Comfort cows का start होता है from the infrastructure of the dairy farm. First of all, we have kept the whole shed area in such a aerodynamic structure of the framework. Temperature हमेशा climatic condition के हिसाब से moderate रहता है with the climatic controlled shed. And इसके अलावा हम लोगों ने जो अंदर ध्यान रखा है वो रखा है foggers का. Fogging system है हमारे पास. हमारा पूरा cloud fogging system वहाँ पे arrange होता है. Then we have number of dairy fans over there. उसके बाद comfort area के अंदर we have bed, comfort bed. तो हमारा कंफर्ट बेड का रीज़न ये होता है कि काउज वहाँ पे जाते बैठते हैं. सो इट इज़ गुड, वेरी गुड फॉर देयर अडर, फॉर देयर हेल्थ ऑल्सो. सो एक्चुअली काउ का वहाँ पे डंक जो होता है दैट वर्क एज अ मैन्योर फॉर देम. जो मैन्योर है वो एज अ एंटीसेप्टिक काम करता है. वी आर नॉट टाइंग अवर काउज. हम अपने काउज को बांधते नहीं हैं. आई मीन वेन एवर रेगुलर चेकअप भी होते हैं, प्रेगनेंसी डिटेक्शन होता है, उसमें भी उनको काउज हम बांधते नहीं हैं. वी हैव हेडलॉक्स फॉर दैट. एंड फीड के टाइम पे जब फीड कर रहे हैं उस टाइम पे हम काउज को बांधते नहीं हैं. मिल्क क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. सो फीड के लिए वी हैव मोर देन 60 to 65 इंग्रेडिएंट्स है वो है. प्री मिक्सेस देते हैं, न्यूट्रिशन कंटेंट होता है. यू टॉक अबाउट सॉल्ट, यू टॉक अबाउट एवरी न्यूट्रिशन. सो ही इज प्रोवाइडिंग अस एवरीथिंग. हम लोग कुछ भी मार्केट से प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट प्रोक्योरिंग एनीथिंग फ्रॉम द कंपनीज. So every single thing like feed, fodder, anything, like we are having our own procurement in our own farm only. So we are making everything over here. So we have our own feed mill, we have our own fodder management. Every nutrition part which is taking care for the animal is being procured in our dairy farm. वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग स्क्रैपर्स हम लोग ने इक्विप किया है. पे मैकेनाइज्ड स्क्रैपर्स हैं. सो वी आर टेकिंग ऑल दी काउ डंक एंड मैन्योर टू दी स्लरी टैंक. From that slurry tank, जो सा गैस होता है we are using for our biogas. The solid material which we are using in our field because we are already having a compliance of organic dairy farm. So which is being certified from Scotland Accreditation Board. तो हम already solid को तो हम फीड में यूज़ करते हैं. एंड इसके अलावा जो यूरिन होता है वो भी एक जगह वेस्ट मैनेजमेंट में कलेक्ट किया जाता है पूरा. मिल्किंग टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पूरा रोबोटिक हमारा प्लांट है. एंड इट इज बीइंग प्रोक्योर्ड फ्रॉम एफी मिल्क इजराइल. 3 टाइम मिल्किंग इन अ डे. सो एवरी टाइम व्हेन दे गो फॉर मिल्किंग दे गो फ्रॉम बेदिंग ऑल्सो. तो वहाँ पे उनका वॉश होता है प्रॉपर, वो पैम्परिंग होती है. उसके बाद उनका जो मैकेनाइज्ड सिस्टम से पूरा का पूरा मिल्किंग हम लोग करा जाता है. एंड इसके बाद वो मिल्किंग करने ही इसलिए आते हैं ताकि उनको फीड मिलता है. So every time we are repeating this process 3 times in a day. Bacteria control we are having like throughout the year biosecurity zone रहता है. So पोटेशियम परमैंगनेट से लेकर लाइम वाटर से लेकर हम लोग हर एक का सॉल्यूशन हमारे पूरे एरिया में रखते हैं. राइट फ्रॉम द शेड ऑफ द काउस, from the milking area. If you talk about the biosecurity of the cows, we are keeping their udder healthy by using the filmadine, which is from France. So we are using that solution to keep the udder parts spare from the bacteria. Pre-milking and post-milking, both the times we are using that thing. And with that, जो milk की जो health reports होती हैं, वो काफ़ी improve हो जाती हैं. That is actually RFID. That is helping us a lot in many ways. उनका pregnancy detection, उनका production और उनकी health reports. Like they are more than 140 parameters. और हम लोग कुछ like we are able to do only 30 of them, which is necessary actually. तो उसमें उनका हेल्थ रिपोर्ट से लेकर उनका मिल्क क्वालिटी से लेकर मिल्क का नेचर से लेकर मिल्क की हेल्थ रिपोर्ट कैसी, सब कुछ उसमें पता चलता है. एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग और आने वाला डिटेक्शन ऑफ एनी डिजीज ऑल्सो विच इज हैपनिंग मे बी टेकिंग केयर इन पास्ट इन लाइक कमिंग 2 weeks उनको हो सकता है. वो डिटेक्शन भी उसके अंदर पहले से हो जाता है. सो फॉर दिस वी आर यूजिंग एफए मिल्क सॉफ्टवेयर इन दिस. एंड उसके लिए है ये RFID जो चिप्स यूज़ करते हैं हम काउस में. We are not focusing the adulteration and unadulteration part, which is a common debate right now in India. हम लोग quality of milk पे काम कर रहे हैं by providing them the supreme feed and fodder quality. So that is the reason अभी हम लोग customers को बोल पाते हैं, consumer जो भी हमारे उनको बोल पाते हैं कि the nutrition facts which you are getting, the protein and calcium जो content होते हैं जो कि milk में होने चाहिए, like you are not consuming milk for fat. I mean you are not consuming anything for fat. You are consuming anything for nutrition only. So milk is one of them. तो milk को भी आप nutrition facts के लिए यूज़ करते हैं. तो उसमें प्रोटीन और कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है because of our feed and fodder. So that is the reason like we are having a supreme quality. इसलिए हमारा जो स्लोगन है that is also purity is our priority.